everyone, I am Amit Darekar and very warm welcome to FinPro Consulting's YouTube channel. हाल ही में हमने एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू की थी जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा एफआरएस के पास स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमने कुछ इंटरव्यूज किए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन शेयर की। एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कब से शुरू करनी है, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे यू हैव टू स्टडी, कितने स्टडी सफिशिएंट होती है, एग्जाम के पहले रिवीजन कितनी बार होनी चाहिए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए कितनी चाहिए, एंड सीबी एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, ये सभी चीजें उन्होंने हर एक इंटरव्यू में अपने अपने तरीके से बताई है जो उनके खुद के एक्सपीरियंसेस है वो, ताकि इन सभी एक्सपीरियंसेस से जो भी डिप्लोमा एफआरएस के फ्यूचर स्टूडेंट्स है, एस्पायरेंट्स ऑफ डिप्लोमा एफआरएस है, तो उन्हें सबको इनसे इन इंटरव्यूज से कुछ मदद मिले, कुछ इनपुट मिले और कुछ हौसला मिले कि ये एग्जामिनेशन हम पास कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हैं। तो आज भी एक ऐसे ही इंटरव्यू के साथ हम आपके सामने आए हैं। तो गेस्ट है हमारी सीए अपूर्वा पांडव। तो अपूर्वा ने ये एग्जामिनेशन सीए होने के बाद लगभग 10 साल बाद दी। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर किए, दैट उनका फीलिंग कैसे था वाइल गिविंग दिस और चूजिंग दिस एग्जामिनेशन आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद एग्जामिनेशन जब दे रहे थे तो पढ़ाई में गैप आया था, तो हाउ डिड शी कोप अप विथ ऑल दीज चैलेंजेस। तो प्लीज ट्यून टू दिस यूट्यूब चैनल, दिस पॉडकास्ट, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम आपके पास और इसी तरह के इंटरव्यूज और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। हाय अपूर्वा, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन दिस पॉडकास्ट एंड लेट मी थैंक यू because you have accepted our invitation immediately to come on to the podcast. Thank you, Amit. I'll immediately come on to the question. The first question is, I'll speak both in English and Hindi, okay? Yeah. You are comfortable, no? Oh. All right. So now, when did you clear your CA examination? Chartered Accountancy आपने कब खत्म किया और डिप्लोमा IFRS कब शुरू किया? कुछ गैप था उसमें? बस ये आप बता दीजिए। मैंने एग्जाम दिया 10 years back. I had cleared my CA examination 10 years back. 10 years back. So May 2012 was the time frame. May 2012. Okay. Yes, and after that I decided to appear for IFRS exam in 22-23. So that was it was a 10 years time gap. And then I decided that I should do something or upgrade my knowledge, and that's why I was thinking about IFRS. 10 साल का gap is very big gap, to be very honest. I mean, I remember when I cleared my CA, मैंने 3 साल के बाद immediately diploma IFRS किया था, but that 3 years also felt like a big gap, but 10 years gap is too much. So what you thought and what was your motivating factor कि अभी मुझे IFRS पढ़ना है? मतलब CA बनने के बाद, see now CA still is, I mean it is a very respected degree in India. So after becoming chartered accountant, what was the need and why did you think that I have to do now something else or diploma IFRS, and then why diploma IFRS first of all? What is a motivating factor for further studies, and then why diploma IFRS? Okay, so motivating factor for further studies was the time gap, the 10 years time gap that I had. Okay. And I was working, rather I'm still working as a plant controller in Cummins India. Okay. Cummins company. When I decided for the further studies, that was I was working in Fulton plant as a plant controller. Okay. And there I felt that I'm coordinating with different groups, say corporate team or the plant team, and the revenue recognition and the capitalization are the two most favorite discussion topics everywhere. Any company you go, you will have that kind of an issues. Yes. So I had to explain or tell them why this can be capitalized or this cannot be capitalized. And again, for the revenue recognition or all other topics, I was discussing or having discussions with corporate team. And that time I felt that, I felt an urge to upgrade my knowledge to make right decisions.
Okay. So that was my motivating factor that Okay. To have a further studies in IFRS, because IFRS, I think yes, you cleared your chartered accountancy in 2012, well, and IFRS came in somewhere around in India. We call it as an yes, IND AS, Indian Accounting Indies, Standards. right, It came in 2015. The roadmap came, and it was yes, applicable from 16-17. right, So तभी जाके फिर मेरे ख्याल से आपको लगा कि IFRS का knowledge also होना चाहिए, हाँ, very important. yes, All right, perfect. So now ये जो 10 साल का जो गैप हुआ, ठीक है, so knowledge upgradation was one of the factor, and obviously there was no IFRS in our curriculum of right, CA at that time, so you decided to do the diploma IFRS. But 10 साल बाद when you thought to do this diploma IFRS, were you aware about the syllabus? क्योंकि मतलब से 10 साल के बाद सीखना, I mean after doing CA, इसको करेज लगता है थोड़ा सा. And one more fact which you mentioned me, I would like to take notice. I mean, everyone should take notice of what she's been with Cummins for last 10 years, more than 10 years. One company nowadays for so long time. That's really good, and hats off to you. I must say that Cummins is keeping you very happy. yes. But apart from that, what was the thought process? मन में क्या चल रहा था, इमोशनल कैसे हो रहा था कि whether you will be able to do it, crack the examination, या syllabus कैसा है? Were you aware about the syllabus first of all, diploma IFRS? Syllabus not 100%. So I knew that I will have inventory, I will have PPE, PP, financial instruments. Financial instruments. I was aware of that, but not complete syllabus. Okay. So I was little bit reluctant, not reluctant as such, but unaware, unsure. अच्छा, unsure. Okay. Yeah. कि क्या करना चाहिए. Okay. But then I decided, anyways, I have to give. Then I will have more knowledge Insight, हाँ. if I do that exam. तो पानी में कूदो, तैरना आ जाएगा ऐसे. Correct. Okay. So Okay. उसके साथ इसके साथ और भी थोड़ा कुछ नॉलेज मिलेगा. हाँ. तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर इट. एंड द अदर थिंग दैट आई वाज not sure about the work life balance, so work life and studies. Okay. Okay. That was another thing that I was very very nervous about it, because I had lot of work pressure here Okay. as In a India. plant controller, because the plant was very new. Okay. It was recently set up, greenfield plant था वो. Okay. So उसमें time मतलब work pressure था, and along with that if I will Commitment be able time to की manage, ज़्यादा थी वहाँ पे, yes, so you have to start early in the morning till late in the evening. right, and I had to travel to Fulton as well. Oh, okay. तो इस सारे के बीच में पढ़ाई हो पाएगी या नहीं, that was my another thing that was going in my mind. Okay. But मैंने फिर decide कर लिया था that I want to do it. तो मैंने sign up कर लिया फिर. तो बाद में जो भी होगा वो बाद में बाद देखेंगे. में देखा जाएगा. No, very true, because unless and until you take such kind of decision, I don't think it's very easy decision to take, because you have your family, Yes. you have your work pressures, Yes. and then apart from that, another thing is your studies. Yes. So ये सबको मुश्किल होता है whenever you handle this, and that's why it's very important for our students also to know this fact कि how you actually deal with this. That's the only reason I'm requesting our past students कि बाबा चलो आप आइए, आपका experience कहिए, so that everybody should be able to get some kind of guidance from what you did from your journey. Right. So मेरा ये ठीक है कि आपने साइन अप कर लिया, आपने ज़्यादा आपको लगा कि चलो बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो शायद कर नहीं पाएंगे. Yes. तो आगे जाके मैं आपको पूछता हूँ कि when you actually first time probably पहले you were not aware syllabus क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, but then when you came across it, तो how did you felt कि अभी कैसे करना पड़ेगा, मतलब इसका how did you approach, मतलब did you think that you will have to get the classes or you will be able to study on your own? So what was your thought process behind that? So I had decided that I will join classes, because studying on my own, I thought that I would not be able to do it, Okay. because of all Okay. other commitments. Absolutely. So classes was always in my mind that I will do Okay. You will classes. do the classes. Okay. So that will help
I don't have to invest much time because I will get Very some true. clarity. Conceptual clarity will be given in the classes. So classes was my first preference always. Always. Okay. And then I looked at syllabus. I was little nervous looking at that, but then I decided that let's complete the classes first, and then we will see how it goes. One But ball at a time, one like ball cricketer at a says, time. one ball Yes. at a time. Okay. Yes, absolutely. Perfect. So जैसे जैसे topics होते गए, then I was getting more comfortable Okay. With the subject per se. with the subject per se. Yes. Okay, perfect. Now, again, you said that you were a little nervous. My next question was exactly on that line. That what were the challenges you envisaged because you were enrolling for the course. कोर्स के लिए तो एनरोल किया भी था, बट देन एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ यू. जो फैमिली है, जॉब है, फैमिली में चलो कोई सपोर्ट भी करता है, हस्बैंड है, फैमिली है, वो सपोर्ट करेगी भी, बट देन जॉब है, देन फिर स्टडी भी करना है, जॉब से थोड़ा टायर्डनेस आ ही जाता है, फटीग आता है, पर्सनल फैमिली रिलेशंस उसमें भी फटीग आता ही है. देन हाउ डिड यू टेक आउट टाइम? सो फर्स्ट थिंग इज दैट चैलेंज. सेकेंड इज ओवर एंड अबाउ दैट वो टेंशन रहता है कॉन्सेप्ट समझ में आएगी क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद उसको रिटेन कर पाएंगे क्या, रिटेन करने के बाद फिर देन एग्जामिनेशन, how do I write in examination? At least it's good thing that it's not a pen and paper based examination right now, it's a CBA examination, but उसके अपने challenges अलग हैं. So what you thought or how did you overcome this कि एक एक challenge में आपको कैसे आपने ओवरकम किया? फर्स्ट इज जॉब एंड फैमिली. आई मीन चैलेंज नहीं कह सकते इसको, डेफिनेटली सपोर्ट ही मिला रहेगा दोनों जगह से, बट द पॉइंट इज फिर भी रहता ही ये दिमाग में अपने कि सामने वाला अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो दिमाग में रहता है कि यार आई हैव टू नाउ परफॉर्म. तो व्हाट वाज किसी से बात की, हाउ डिड यू डू दैट? सो आई टॉक टू फैमिली फर्स्ट. उनको ही बोला that I have decided to sign up for this course and I will probably need your help. So family was my first point of contact before I sign up for this. Okay. और फिर there were few things in the family that I did not go for. एक function था तो उसके लिए मैं नहीं गई. Okay. तो because this commitment or this was more important than other things is what I thought that time. तो वो एक क्या about job ज़्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, बट whenever I used to get time, basically majorly on weekends I used to study then. Okay. Weekdays को मुझे hardly time मिलता था उस टाइम पे. So your strategy mainly was to study on the weekends rather than during weekdays. I had actually decided to study at least 2-3 hours for 5 days in a week. 5 days in a week. Okay. That was the thing that I had decided. So 10 to 15 hours of study in a week. That I had decided. That was a plan. That was the plan. So अगर week में time मिलता था तो I used to do that. Otherwise I used to cover that during weekends. During weekends. Okay. टोटल वीक में 15 घंटे पढ़ाई का ये टारगेट शुरुआत में था. Okay. और फिर मैंने 3-3.5 महीने पहले, 3 से 4 महीने एग्जाम के पहले मैंने पढ़ाई शुरू की थी. 3 से 4 महीने पहले पढ़ाई शुरू की थी. बट देन व्हेन डिड यू टेक क्लासेस कितने देर पहले लिए थे? क्लासेस एक्चुअली मैंने किए थे जनवरी टू मार्च अप्रैल तक मेरे क्लासेस थे, एंड दैट टाइम आई हैड प्लान टू गिव एग्जाम इन जून. ओके. लेकिन उस टाइम पे मेरा रीलोकेशन चालू था यूएस, तो मैंने जून का एक अटेम्प्ट नहीं दिया था. ओके. Then I moved to US and फिर I started my exams or started preparing for the exams. Okay. So I cleared in December 23. Okay, you cleared in December 20. First appearance you cleared. First attempt. Okay, generally मैं ये कहता रहता हूँ सबको फर्स्ट अटेम्प्ट मिस नहीं करना. जो जून का आपका अटेम्प्ट रहेगा जो आपने शायद पोस्टपोन किया दिसंबर में बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट्स, तो ये भी हो सकता है, बट यू वर कमिटेड कि मुझे जो भी करना है वो दिसंबर में करना है. उसके बियॉन्ड मुझे ये नहीं करना है. तो जनरली ये होता है कि पोस्टपोन किया तो नहीं होता, बट आपकी केस में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है कि आपने पोस्टपोन किया लेकिन आपने अटेम्प्ट दिया. That is very important. Okay, all right, so this is very good information. Weekly 15 hours to approach during 5 days. अगर वहां पे कहीं शॉर्टफॉल आता है तो वीकेंड में
आपने उसको कवर अप किया. कवर अप किया. परफेक्ट. सो देन लेक्चर्स के बाद, या लेक्चर्स तो आप कब देखती थी, मतलब लाइव ऑनलाइन की थी आपने या इट वाज लाइव की थी लाइव क्लासेस? किया था मैंने उस टाइम Okay. पे. एंड Okay. देन व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीिंग आई वेंट थ्रू ऑल द लेक्चर्स अगेन, द रिकॉर्डेड Okay. सेशंस अगेन. ओके. और उस टाइम पे फिर आई स्टार्टेड टेकिंग नोट्स एंड फिर मैंने फिर रिवीजन किया उसके बाद. आई मीन आई वेंट थ्रू द ऑल लेक्चर्स अगेन एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन रिवीजन. Perfect. Now my next question is exactly that कि concept understanding is fine, that part is कि आपने पहले क्लासेस से वो अंडरस्टैंड किया, बाद में थोड़ा कुछ पढ़ा रहेगा, जैसे वीक में आप 15 आवर्स कहती थी, थोड़ा इधर उधर डेफिनेटली हुआ होगा, दैट आई अंडरस्टैंड. बट देन जब आपने कॉन्सेप्ट रिटेंशन की बारी आई, दैट कई बार ऐसे होता है दैट मेनी स्टूडेंट्स टेल कि आपके सामने जब रहते तो सब लगता है कि सब आता है, सब समझ में आता है, सब चल रहा है, सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, ये मैं भी कहता था मेरे टीचर्स को. बट देन व्हेन यू स्टडी ऑन योर ओन, देन यू टेंड टू फॉरगेट द थिंग्स. वो ऐसा लगता है कि यार ध्यान में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिटेन. हाउ डू आई गो अबाउट इट नाउ, बिकॉज इट पाइल्स अप ऑनटू योर नर्वसनेस, टेंशन बढ़ जाती है कि now we are closer to the examination and if I don't remember this now, if I don't retain this now, how will I pass the exam? तो knowledge retention, concept retention के लिए कुछ specific thing you did, anything for that? Yes, so when I got the books for the exam, those were 4 books and Okay. उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया था ये 4 बुक में एग्जाम के लास्ट दिन पे नहीं देख सकती. Correct. So I decided to take my own notes. So when I started revisiting the lectures again, that Okay. time I took my Own notes. my own notes, and those notes I still refer today. Really? Yes, I do that. So whenever I am stuck on some things, then I still refer those notes, and that is helping me in my US role as well. Fantastic. I am referring all those notes even today. Yeah, I mean, this is really good information that whatever you study and the fundamentals will always remain with Yes. you, and that will always keep you helping in whatever the practical issues you will face Yes. in your practical life, and that's really good. So concept retention के लिए you said it, yeah, you made your own notes, Own notes. summarized form में किया रहेगा, Yes. and कभी कभी वो बार बार पढ़ना ऐसे होता है उसको, या सिर्फ लास्ट डे रिवीजन के लिए रखा था ऐसे उसको कुछ? जब मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए थे तो रिवीजन के टाइम पे आई यूज्ड टू रेफर माय ओन नोट्स. ओके. अगर कुछ लगता है डिटेल में देन आई यूज्ड टू रेफर बुक्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओन नोट्स भी पढ़ने का टाइम कुछ था क्या, कि आज कॉफी के लिए जा रहे हैं तो कहीं लिखा है कॉफी डेस्क के इधर रखा है या वार्डरोब पे रखा है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं वार्डरोब पे रखा है, तो एक बार दिन में बिफोर गोइंग टू स्लीप पहले वार्डरोब पढ़िए. हाँ. मतलब जो भी लिखा है उसमें नोट्स शॉर्ट नोट, तो आज कुछ पढ़ा ही नहीं हुई तो एटलीस्ट लेट्स बी इन टच विद द सब्जेक्ट पर से. हाँ, सो वो नोट्स में कैरी करती थी मेरे साथ कभी भी, अच्छा. wherever I go. ओके. जब टाइम Okay. मिलता था आई यूज्ड टू जस्ट रेफर और गो थ्रू Okay. दोज नोट्स. और कभी कुछ याद में नहीं आया तो फिर वो रेफर करती थी मैं. अच्छा. वार्डरोब पे सच नहीं हाँ, लगाया नहीं था हर एक because का स्टाइल ऑफ कोर्स Yes. अलग रहेगा डेफिनेटली. लेकिन वो बुक हमेशा मेरे पास रहता था, अभी भी है, हाँ. अभी यहाँ पे नहीं है बट है Okay. मेरे पास. No, excellent. So now this is again about what you did for the knowledge retention. Right. Now again, ठीक है, this examination is a professional examination, as you must have experienced this. Examination को जब अब जाते हैं हम लोग, now this is not a pen and paper based examination. Right. Computer based examination हो चुकी है ये. You give this examination remote examination or center based? Remote examination. Remote examination. So what you did specifically to prepare yourself, forget about whether it is center based or remote examination, but CB examination के लिए कुछ challenges क्या लगे आपको? What was difficult in computer based? अब लिखने के लिए तो I know that challenges की that I cannot write after 10 years of gap. Right. I am typing every day and day out on my computer laptops, and now suddenly somebody asks me to write something, even a single page of paper, then मैं नहीं लिख पाता, पूरा हाथ भर जाता इधर से. So it's very difficult. So it's good that it's a computer based examination, but what are the different challenges of a computer based examination? Computer based examination में the real challenge that I faced was the keyboard, because I was very used to my office laptop, Okay. but I could not clear that computer exam the testing Okay. because of some background running applications. So I Okay. could not
pass that with my office laptop. अच्छा, so eligibility जो कंप्यूटर ऑफिस Complete- लैपटॉप में चाहिए वो हुआ नहीं था आपके हुआ पास? नहीं था. Okay. There were some background running Okay. application, Zoom का और Teams का जो Okay. रहता है, so because of that I could not pass that computer based Okay. testing. So I had to use my personal laptop, और personal laptop का keyboard was different than my ऑफिस लैपटॉप. office laptop. So that was my first challenge of using the keyboard. So I used my separate Okay. keyboard and mouse. I used that. And the other challenge was how to write on a screen. So maybe Okay. Excel or Word or whatever. So I'll put it little differently. How to maneuver the windows and how to इतने सारे windows at a time खुले रहते हैं, exhibit Right. 1, exhibit 2, exhibit 3, Right. and your answer sheet is also there. How to Yes. move around Move around. within that one screen. Yes. That was a challenge. Yes, that was a challenge, and I initially thought that I would be able to get 2 screens. Oh, एक स्क्रीन okay. पे क्वेश्चन Question रहेगा, दूसरे दूसरे आप- स्क्रीन पे आई कैन Okay, राइट द समझ- एक्सेल रहेगा, शीट हाँ. और ये कर पाऊंगी, बट दैट वाज नॉट अलाउड. Hmm. So I had only one screen with that. So moving between the screens was Was a another challenge. Okay. So what I did was I gave one kind of exam on the exams that are available. ACCA के past ACCA. examination questions जो है वो. Yes, Okay. I just tried one of those exam how Okay. to navigate between everything. Okay. So that I did. But वो एक आपके लिए sufficient था. एक sufficient था. I just did one on ACCA screen, but other than that I solved all the consolidation questions on Excel itself. Everything from that book. I Okay. solved all questions on Excel. Excel itself. So that gave me little direction how to appear for the exam, how to start with the consolidation question. Okay. Okay. So that actually helped me solving on computer. Okay. So or Excel. practice is the key for Practice is the key, getting yes. through the CBA examination. Yes. Perfect. So that was, again, one more challenge generally student ask me. Another thing is, in terms you told me that you've did this study for 3 to 4 months, and Yes. you started your lectures from January and you gave examination in December. So kind of you get 10 to 11 months. But in your experience, had your relocation thing did not came in between, what is a sufficient time you think it's there for the preparation of diploma IFRS? अगर एक एग्जाम क्लियर करना है तो आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है इसमें? If you are doing your proper regular studies, then I think 3 to 4 months time before the exam is sufficient. It's sufficient. Okay. And then Total number of hours approximately, because let's say we have lectures of about 110 hours. ऐसे है for example. तो how much study in terms of total number of hours you might be required? अगर है आपके पास मतलब दिमाग में सोचा है तो so otherwise 10 to 15 hours is weekly what I was studying. So Okay. 12 weeks probably we Okay. will have. Okay. 12 So weeks. around 150 hours approximately. Right. Okay. So that much I studied, and the last week of exam I was studying more. I was like working from home, studying more. Okay. Or I Did you take any leave? I took a leaves also. अच्छा. एक week का leave ले लिया था मैंने. I One mean, I week leave. adjusted some leave, Paid office leave, leaves हाँ. and everything, but 1 week leave I took. But एक हफ्ते का लीव लिया तो आपके लिए वो sufficient हुआ. Sufficient. This हो गया might था. vary for Students, student to student, no doubt And about then it. other preparation also. So before, when I was going through the lectures and everything, I went through all the lectures, and I went through the all past examination questions twice. Twice. Okay. Twice. How many I- numbers you how many marks you've got? I got 70 marks. 70. Perfect. Okay. All right. So that's because of twice you have solved the past examination. And then all the consolidation questions, I also did that on Okay. Excel. All on consolidate. So that helped me. So I think 1 week leave before the exam was sufficient for looking at my studies and everything. I felt No, that your that gap was 10 years, and considering your job and everything, I Yes. think that is very good number. And it requires this much of hard work after looking at the lectures twice. मतलब I mean मेरे किसी टीचर के साथ एक बार करो भी lectures और वही lectures दोबारा से सुनो भी और फिर खुद का स्टडी भी करो, वो सभी करना it takes a lot of क्या कहते हैं courage, commitment, ये दोनों चीजें लगती है. So and it's consistency, I will also add. consistency. I mean,
practice करो, और the more you practice, the more clarity you will get, is what I will say. So, कंसिस्टेंसी के लिए एनीथिंग स्पेसिफिक यू डिड कि जैसे प्लान बनाया एंड स्टिकिंग टू द प्लान, ऐसे कुछ? so एक वीक का मैं प्लान बनाती थी कि अच्छा। एक वीक में सपोज 2 स्टैंडर्ड्स मुझे कंप्लीट करने हैं, तो ऐसे बनाती थी मैं, नॉट डे टू डे बेसिस आज ये करना है वो करना है, बट एटलीस्ट अ वीक I am going to finish these many things in this week, and week wise plan, and then that helped you, week wise plan helped you? Week wise plan helped me, क्योंकि not necessarily I will be able to study every day because of some other commitments. Of course. So week wise plan was my target, and that I tried to complete that most of the times. कुछ नहीं हुआ तो I had kept a buffer. एक बफर दिन रखा था, तो उस टाइम पे मैं I was used to cover that तो up. बफर दिन बढ़ने नहीं चाहिए एक के बाद एक, that's the only thing you know we should understand. नहीं तो आज नहीं हुआ तो कल नहीं तो परसों, फिर बफर डे में बाद में सिर्फ एग्जाम नजदीक आती है, तो it becomes very difficult. Yeah, I understand. Now coming on to the last few questions. One is, you said you gave the CBE examination. It must be your home location, I mean your home, or one room in your home. Yes. Or it may be your office, whatever it is. What care you had to take? Like, I will tell you क्या होता है. घर में हम करते हैं तो घर से एग्जाम देते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज है रिमोट इन्विजिलेटर आता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाना, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वो अगर वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्ट नहीं होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर अलोन. Yes. मतलब सबसे बड़ा एंजाइटी एग्जामिनेशन में वो रहता है जनरली, दैट if you are all alone, you are not looking at the others, was anybody is having the same kind of anxiety, then you can understand, चलो मैं ठीक हूँ फिर भी. तो एक ऐसा कंफर्ट आ जाता है क्लासरूम में जाने के बाद, चलो सामने वाला है उसको भी थोड़ा सा तकलीफ है, आई एम फाइन, मुझे इतना नहीं है. तो व्हाट वाज योर माइंडसेट, और क्या था कि घर पे ठीक है चलो ट्रैवल टाइम बच गया, ये बच गया, वो सब ठीक है, बट देन हाउ डिड यू ओवरकम? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, इंटरनेट इश्यूज आते हैं क्या, तो ऑल सब क्या होता है फिर? मैंने एग्जाम दिया था यूएस से, सो एक्चुअली ये इंटरनेट इशू के बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, इंटरनेट के बारे में सोचा नहीं. ओके. और आई रेड थ्रू देयर इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रूम में होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि यू शुड नॉट हैव एब्सोल्युटली नथिंग इन योर रूम एक्सेप्ट फॉर योर टेबल एंड योर आईडी कार्ड एंड लैपटॉप. यस. ओके. So I had kept my passport with me, and the kind of hall ticket that I had kept with me, and my computer, keyboard, mouse. Other than that, I had nothing in my room that time. But it went smoothly. कुछ प्रॉब्लम नहीं आया? I logged in 30 minutes before the exam. 30 to 45 minutes before the exam, and I completed that test. That invigilator, remote invigilator, right? He wanted photos of everything, so background का photo, side का photo, सब का photo मैंने उनको दिखाया. I mean, I took those photos and I sent it to him. He asked me that what do you have on your desk? I said I have only passport and the hall ticket. He said fine. Then I started writing my exams. Okay. So I had told my husband that you just wait outside if I need anything. Then he later told me that I started listening to your keyboard typing. Then he went out. Okay. So that went smooth actually. Okay. Nowadays, I think there are not many hassles come because that process has also been sorted out a bit and to a next level. Yeah. So I don't think even in India, but we in India might face this kind of a challenge of electricity cut or internet issues. So probably students in India have to consider about those issues as well, to have an electricity backup, to have additional internet connection, so that they will be able to it goes smoothly. Because exam में ऐसे कुछ होता है तो anxiety and nervousness next level पे बढ़ता है. You start sweating also. Yes. So ऐसे एक्चुअली हुआ था मुझे when I was appearing for the final exam of CA. Okay. मेरे हाथ एकदम स्वेटिंग हो गया था, ऐसे हो गया, टेंशन आ गया था मुझे. Okay. But this time it went well. It went well. Yes. और ऐसा कुछ होता है तो और भी है. और भी नर्वसनेस बढ़ता है, तो बिकॉज टाइम इतना बाद में वापस नहीं होता हमारे पास, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन. एनीवे, आई जस्ट कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ अ सजेशन यू वुड लाइक टू गिव द अपकमिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमा FRS कि उनको
किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, या व्हाट अप्रोच दे शुड फॉलो वाइल थिंकिंग ऑफ डिप्लोमा एफआरएस, इसके बारे में आपको क्या सजेशंस देना चाहती हो आप? सजेशन में इतना ही दूंगी कि इफ यू आर कमिटेड, आई मीन if you commit for studies and exam, then go for it. And whosoever teacher you are going or having your lectures with, just listen to your teachers. Whatever he is saying, just follow him, trust him, and then probably will pass with flying colors. And again, commit to your studies and follow your Schedule. Yes, that will help you. That discipline, Yes. commitment, and following Yes. the instructions of the teachers Yes. is probably the key to pass this examination. Yes. The most important, again, you already mentioned that jump into the water, आपको तैरना आ जाएगा, तैरना पानी आ में कूदो पहले, that is the कूदो। key thing. तो Yes. automatically वो हो ही जाएगा. Yes. And trust yourself, basically trust your teachers. Teachers and yourself. Yes. Perfect. And one ball at a time. ज़्यादा सोचो मत. पूरा One ball at a time. Perfect. All right. Thank you so much, Apurva, for coming here and sharing your entire journey, entire your experience. It is really, really courageous. I'm telling you, 10 साल का गैप होने के बाद ये सब करना, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करना, it's really good, and kind of I would say it's good inspiration for the students also. बहुत लोगों को लगता है 4-5 साल हो गया और अभी कुछ सीखा नहीं, तो वो इतना है भी नहीं. 10 साल का गैप काफी बड़ा है. तो once again, thank you so much and wish you all the best. Thank you so much.